people and welcome to Shifting Gears, and as you can notice I am seated in the second row of the all new Tata Safari. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं about the comfort that you get when you are seated in the second row and in the third row of this all new Tata Safari. अब ये जो Tata Safari है आप इसे 6 सीटर और 7 सीटर वेरिएंट्स में खरीद सकते हो. You can either opt for this setup, these captain seats in the second row, या आप सेकंड रो में एक बेंच सीट ऑप्शन भी खरीद सकते हो. यू कैन ऑप्ट फॉर दैट और उसकी वजह से आप सेकंड रो में 3 लोग बैठ पाओगे. राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वेरिएंट यू कैन ओनली हैव 2 पैसेंजर्स इन द सेकंड रो. अभी इस वीडियो में टाटा सफारी का हमारे साथ XZ प्लस डीजल मैनुअल वेरिएंट है. सो दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम एंड ऑफ कोर्स यू कैन मेक दैट आउट लुकिंग एट दिस मैसिव ड्यूअल पेन पैनोरामिक सनरूफ व्हिच एड्स अ लॉट ऑफ ड्रामा. इसकी वजह से कैबिन जो है आपको काफी ब्राइट और एयरी फील होती है. चेक इट आउट बिकॉज यू गेट ड्यूअल टोन इंटीरियर अपहोल्स्ट्री. इट इज नॉट एट ऑल क्लॉस्ट्रोफोबिक. द रूमीनेस ऑफ दिस टाटा सफारी इज गोइंग टू मेक यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल ऑन द गो. अब चलिए कंफर्ट के बारे में बात कर लेते हैं. अभी जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जस्ट चेक दिस आउट, आई एम गेटिंग फैंटास्टिक अंडर थाई सपोर्ट. इसकी वजह से द सीट बाय डिफॉल्ट इज कीपिंग मी वेरी वेरी हैप्पी. द सपोर्ट दैट आई एम गेटिंग to my thighs, to my back, and the overall seat positioning is quite a comfortable place to be. और यहाँ पे इस सीट पे बैठ के मैं एक लंबे रोड ट्रिप पे आसानी से निकल सकता हूँ. I will have no problems at all. As you can notice, this seat I have adjusted to a comfortable position right now for myself. लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं इस second row seat को all the way backwards भी push कर सकता हूँ. Now this is all the way back. And this is offering me phenomenal amount of leg room. मैं क्रॉस लेग भी बैठ पाऊंगा and I will have no problems at all. ये जो सीट बैक है it is at a nice and relaxed angle. लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसे और ज्यादा रिक्लाइन कर पाओगे. So check this out. This is the final locking position for this captain row seat back in the second row of this Tata Safari. So this is going to be super duper convenient and comfortable अगर आप एक नैप लेना चाहते हो, यानी कि अगर आप सोना चाहते हो एक लंबे सफर पर. यहाँ पे इस कैबिन में आपको कंफर्टेबल रखने के लिए बी पिलर पे एसी वेंट दिए गए हैं and the AC performance by default in this Tata Safari is fantastic and you will have no problems at all. It is quite a hot and sunny day today. It is quite a bright day today. लेकिन फिर भी even with this sunroof curtain open all the time, we did not feel the heat inside the cabin of this Tata Safari. So I think it is a job well done in terms of cooling efficiency. I'm going to get the seat back up again and I'm going to be in a reasonable position. I'm 5 feet 8 inches in height. Check this out. Very good leg room, very good knee room, decent amount of foot room to move my feet under the driver's seat, and I will have no problems being here at least for 3 to 4 hours and it is going to be a comfortable place for you and your family members. अगर आप ये टाटा सफारी खरीद के आपके डेली लाइफ में इसे एज अ शॉफर ड्रिवन कार इस्तेमाल करना चाहते हो, I think you will be a happy customer. There is ample amount of headroom available as well. So even if you are a 6 foot tall passenger owner of this Tata Safari, there is very good room over here. आपको स्टोरेज के लिए काफी ऑप्शन मिल जाती है इन द सेकंड रो. उसके लिए हमने जो इंटीरियर वीडियो अपलोड किया है, डू चेक इट आउट. यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट what this car has to offer on the inside and if at all it is going to keep you happy and if at all it feels premium and luxurious or not. But enough talking about the second row. Let me jump to the third row and tell you everything about it. So now just check this out. I am in the third row of this Tata Safari and I am wearing my seat belts. Always wear your seat belt. आप किसी भी रो में बैठ जाइए. If your car is a 3-row vehicle, 2-row vehicle, or if you have a sports car, always wear your seat belt. That seat belt is going to save your life. Now check this out. Ample amount of leg room. ये सीट मैंने मेरे हाइट के लिए एडजस्ट कर रखी थी and I am quite happy and this is quite surprising and it is a good place to be even for an adult. यहाँ पे आप देख लीजिए, there is reasonable amount of headroom left as well. So me, I am not feeling cramped and tight over here in the third row of this Tata Safari. मुझे comfortable रखने के लिए AC vents भी यहाँ पे दिए गए हैं, which is throwing fantastic amount of cold breeze
straight onto my face, so I will have no problems even on a hot sunny day being seated over here. So if someone asks you to sit in the third row of the Tata Safari, it is not going to feel like a punishment. यहाँ पे इस सेकंड रो सीट के नीचे मुझे पैर स्लाइड करने के लिए भी थोड़ी बहुत जगह मिल रही है, and although my knees are not pointing upwards completely, I won't say that the seat bench is the most comfortable place, but then you can at least stretch your leg this way and then you will still be happy over here for a short road trip at least. आप यहाँ पे इस थर्ड रो में बैठ के 2 से 3 घंटे का सफर तो आसानी से कर पाओगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है. So if you want to buy this car and if you like to go out with your friends and family, you can have 6 adults in this SUV, and I don't think anybody is going to complain about the space and room that is on offer over here. थर्ड रो के लिए जो AC वेंट्स आपको मिल रहे हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कंट्रोल भी दिया गया है. You have a total of 3 fan blower settings over here, and it gets really loud अगर आप लेवल 3 पे इसे इस्तेमाल करते हो. और लेवल 3 पे जो फैन स्पीड इंटेंसिटी है वो भी काफी अच्छी है. So if you want to cool down the cabin really quickly, just turn this third row AC on as well. So your humongous cabin of this Tata Safari can be cooled that much faster. यहाँ पे जब मैं बैठा हूँ, check this out, I am also getting adjustable headrests. So this is going to offer me decent amount of comfort and also protect me from whiplash injury. ये जो टाटा की सफारी है, over here in the third row, there is no seat back adjustment. तो यहाँ पे आपको कोई recline angle adjustment नहीं मिल रही है. This is a fixed position. I can't really see any mechanism that is going to allow me to recline it further or get it more upright. लेकिन by default जो setup आपको यहाँ पे दिया गया है, not a bad deal at all. Now let's talk about comfort. अभी हम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे कम्यूट कर रहे हैं, and over here in the third row, it is not at all bouncy. ये जो सफारी है, it makes use of a monocoque construction, a monocoque chassis, and it is not a typical body on ladder construction, and the car is very nice and stable. हमने इसके बारे में काफी बात की है in the drive video, so do check it out. You will get to know how dynamically sorted this SUV is, and because the suspension setup is so sorted, being seated over here, you are not going to feel sick at all. जब ड्राइवर जो है गाड़ी को undulated patches पे से भी चला लेगा, ऐसा नहीं है कि आपको पीछे काफी thrown around वाली फीलिंग आने वाली है. You will not be tossed in this third row seat, so you can definitely commute around with this car with 6 people or 7 people, and everyone should be happy. I'm again going to come to the second row of this Tata Safari. Check this out. It is very easy to move around and switch between these seats. I am a full-sized adult until and unless you think that I am a midget, but there is enough room to move around. You can easily crawl and switch between the seats inside the cabin of this SUV. So guys, let me tell you, I am quite surprised in terms of the space and packaging and comfort that this Tata Safari is offering me. Very good car to drive, fantastic car in the second row, and a brilliant third row seat as well, even for an adult. Ideally it is going to be best suited for kids. अगर आपको एक काफी लंबा सफर तय करना है, लेकिन road trips के लिए your friends will still be happy over there as well. And because this car has premium JBL sound system, इस गाड़ी में आपको boot area में एक subwoofer भी दिया गया है, so third row passengers को थोड़ा extra bass जरूर feel होने वाला है. So let me know what is your opinion about this 6-seater Tata Safari with these captain seats. क्या आप ये वेरिएंट खरीदना पसंद करोगे? क्या आप टाटा सफारी खरीद के इसके सभी सीट्स को पैसेंजर्स के लिए इस्तेमाल करना पसंद करोगे, या आप इस गाड़ी को एज अ 4-सीटर या 5-सीटर खरीद लोगे एंड देन यू विल कैरी एक्स्ट्रा लगेज इन द बूट एरिया? Let me know what is your opinion. Let me know if you would spend your hard-earned money, that extra bit, over the Harrier and bring this legendary Safari nameplate home. Goodbye. Always drive safe. Always wear your seat belt. Whichever seat you are seated in inside the car, seat belts are very, very important. They are going to protect you from any kind of an injury. See you soon, and don't forget to press that bell icon.